I want to know where I can go or not around. Hi, have you ever misunderstood someone? Or have you ever gotten misunderstood by someone? Such a lame question, right? क्योंकि कभी ना कभी या तो आपने या फिर किसी ने आपको मिसअंडरस्टैंड तो किया ही होगा. It is such a human thing to do, to misunderstand things. So here is my hypothesis on this. Think about every rom-com, dramatic series, or literary adaptations that you've ever loved. What do they have in common? Well, it's omniscience. As the viewer, you're given omniscient access to every character's inner world. You hear voiceovers, you listen to their dramatic soliloquies in the rain. You see the exact moment a misunderstanding happens and you know why it happens. क्यों? क्योंकि you can literally hear their thoughts. जो inner monologues होते हैं वो हमें सुनाई देते हैं in the movies or even in books. When you read a book, let's say any rom-com. For example, I've read Better Than the Movies, which is a great book by the way. और उसमें जो वेस की पीओवी है वो मैं रीड कर पा रही हूँ तो मुझे पता है वेस के ब्रेन में क्या चल रहा है. एंड नेक्स्ट इज लिस की भी मैं पीओवी रीड कर पा रही हूँ तो आई नो व्हाट दीज बोथ कैरेक्टर्स हैव इन देयर हेड्स. सो इन अ वे आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट? These movies, books, they train us to believe that human beings come with a soundtrack and an internal narrator that can be decoded if you just pay attention to it. Because our brains learn and adapt through observation, we have conditioned ourselves to act like viewers in our lives. We start treating real life interactions as if we are watching a movie where we're supposed to guess the script behind someone's eyes. But this is where it goes wrong. Real life does not have voiceovers. हमारी लाइफ में डायरेक्टर्स नहीं होते हैं. बुक्स होती हैं उनके राइटर्स होते हैं और जो मूवीज़ होती हैं उनके डायरेक्टर्स होते हैं. सो दे आर बेसिकली ह्यूमंस हु आर पोर्ट्रेइंग ह्यूमन इमोशंस. तो जो भी कैरेक्टर बोल रहा है दैट इज़ टेक्निकली डायरेक्टर्स ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि डायरेक्टर सोच रहा है कि वो कैरेक्टर के माइंड में चल रहा होगा. इन रियल लाइफ वी डोंट हैव डायरेक्टर्स बिहाइंड अस, राइट? हमारा माइंड वर्क कर रहा है. वी आर इंडिविजुअल्स. हर एक के अपने, एक इंसान के अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, हर एक इंसान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, देयर पर्सपेक्टिव्स, द वे दे सी द वर्ल्ड, दे आर डिफरेंट. वी डोंट हैव अ वॉइस किंग एट द बैक ऑफ आवर हेड. और हमारे जो थॉट्स हैं वो भी एकदम सिंगुलर वॉइस में नहीं चलते हैं. जैसे देर आर वॉइस ओवर्स इन अ मोनोलॉग्स इन मूवीज वेर अ थॉट कैन बी हर क्लियरली क्योंकि वो बैकग्राउंड में आवाज़ चल रही होती है. लेकिन हम रियल लाइफ में ऐसे नहीं सोचते हैं. देर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स गोइंग ऑन इन आवर हेड एट द सेम टाइम व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग. तो दिस इज टोटली डिफरेंट सिनेरियोज. When someone is quiet around you, a fictional narrative tells you, oh, they're harboring a secret resentment, yeah, or they're going through some dramatic arc. But in reality, they're probably just tired or thinking about what to eat for dinner, or they're probably just zoning out, you know. Because movies teach us that every action has a hidden dramatic motivation. We invent complex storylines for simple moments. The thing is, जो movies होती हैं वो एक dialogue के अराउंड बनी होती हैं. There is a storyline. तो कुछ ही घंटों में एक पूरी लाइफ पोर्ट्रे करनी होती है. सो एवरी सिंगल मोमेंट इज़ काइंड ऑफ हैविंग इंपॉर्टेंस इन इट. तो हर एक मोमेंट का कोई ना कोई कनेक्शन होगा. रियल लाइफ में इट इज़ वेरी लार्ज टू be in that sense. So we basically fill in the blanks with assumptions, label those assumptions as facts, and react to a story that we created in our head. Okay, let's take example of Bollywood movies. तो बॉलीवुड मूवीज़ में हमें एक पूरा मोनोलॉग मिलता है. देयर आर मेनी आइकॉनिक मोनोलॉग्स टू इन द बॉलीवुड मूवीज़. वी आर काइंड ऑफ अवेयर ऑफ what the person is thinking. We can clearly listen to the perspective of the person. We're basically getting to know what the director wants us to know or the writer wants us to know. रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है. सो द थिंग इज, अब इस माइंड रीडिंग के ट्रैप से कैसे निकलें? हाउ डू वी ब्रेक दिस साइकिल? So the next time you catch yourself spiraling into a 2 a.m. overthinking session about what someone meant by a specific text or look, stop. Just stop. Please pause, breathe, and remind yourself this is not a movie. You do not have access to their internal monologue, or more importantly, you're not supposed to. Because हर कोई एक individual है with their own perspectives on life. Real people are messy, distracted, and often don't even know what they're thinking. Let alone hiding a secret plot against. Most of the time हमारे brain में इतना सब कुछ चल रहा होता है that we are not even focusing on any of that. You know, it's just blurry. It's just a blurry scenario in our heads. Hundreds of scenarios at the same time. So stop trying to be the director of someone else's mind. If you're confused about how someone feels, ask them directly. And if you can't ask them, let the unknown stay unknown without filling it with anxiety. You can never be 100% right about what's going on inside someone else's head, and honestly, that's a relief.
So, what's the scenario where your brain totally made up a movie plot about someone only to find out it wasn't true at all? Let me know in the comments below. And if you are still figuring it out, one small page at a time. Until next time, keep your cup full and your mind open.